Assalamualaikum class 2. How are you all? I hope you are all fine and doing great at your homes. Before starting our today topic, we have to recall our previous one. So what is our previous topic? Ahil, you tell me बच्चे, what is our previous topic? Yes, our previous topic is addition of 3-digit numbers, non-conversion. Our previous topic is addition of 3-digit numbers no conversion. It means we have to add the numbers that are given according to the place values. हमें क्या करना है, अपने नंबर्स को ऐड करना है और गिवन प्लेस वैल्यू के नीचे लिखना है. एडिशन ऑफ 3-digit नंबर्स, हमने 3-digit नंबर्स की प्लेस वैल्यू को ऐड किया. ना एग्जाम्पल नंबर 1 हम सब एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि हमारा टॉपिक है क्या था एक्चुअली. एग्जाम्पल नंबर 1 विच इज 100, tens, ones and units. 9, 0, 7, 9, 0, 7, 1, 2 and 1. Now we have to add these numbers. So Iman, बच्चे you tell me where we will start our calculation. कि हम अपने कैलकुलेशन को कहाँ से स्टार्ट करेंगे? Yes, we will start our calculation from right hand side and from unit or ones place value. हम अपने कैलकुलेशन को कहाँ से स्टार्ट करते हैं? From right hand side and from unit and ones place value. So Anas बेटा you tell me when we add 7 into 1, जब हम 7 में 1 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा? Good. 7 plus 1 is equal to 8. 7 में जब हम 8 को ऐड करेंगे, 7 में हम 1 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 8. और हमने नंबर को जो हमारे पास आंसर है उसको राइट और लेफ्ट मूव नहीं करना, अकॉर्डिंग टू प्लेस वैल्यू ही नंबर को लिखेंगे. 7 plus 1 is equal to 8. 7 plus 1 is equal to 8. Now what is your second step? हमारा सेकंड स्टेप क्या होगा सारा बच्चे? Yes, और second step is add the tens place values number. हमारा सेकंड स्टेप क्या है? Add the tens place values number. What are the numbers on tens place value? लाइका कौन से नंबर्स हैं बच्चे? आप मुझे बताएं कि टेंस की प्लेस वैल्यू पे कौन से नंबर्स हैं? गुड. 0 and 2. कौन कौन से नंबर्स हैं? 0 and 2. आयशा बच्चे यू टेल मी 0 plus 2 is equal to good. 0 plus 2 is equal to 2. So what is our third step? Rahmat bachche you tell me what is our third step? Yes, our third step is add the 100 place values number. Our third step is add the 100 place values number. What are the numbers on 100 place value? Arshia beta you tell me. Hmm, 9 plus 1. So 9 plus 1 is equal to
10. 9 plus 1 is equal to 10. Now 10 is greater than 9. क्या है? 10 is greater than 9. So we will write 0. And we have no another number to give carry on the place value of next number. So we will write 1 on the given space. Now our answer is 1028. Now our answer is 1028. I hope this example will help you to recall your previous concept. Now we have to go on today's topic, which is addition of 3-digit numbers. Now our today's topic is addition of addition of 3-digit numbers. Converting ones. Addition of 3-digit numbers converting ones. Now we have to add the numbers. Then if the number comes greater than 9, अगर हमारे पास कोई नंबर greater than 9 आ जाएगा तो हमें उसको कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा? 10 से. कहाँ पे कन्वर्ट करना, चेंज करना पड़ेगा, ये कन्वर्ट करना पड़ेगा मीन्स 10 से. So Sam, will you tell me from where we will start our calculation? Yes, we always start our calculation from right hand side. हम पहले 2-digit प्लेस वैल्यूज पढ़े थे, अब हम कितनी प्लेस वैल्यूज पे काम कर रहे हैं? 3-digit प्लेस वैल्यू से. And where from we will start our calculation? Yes, from right hand side and from unit or ones place value. हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? ones और unit से place value से. Whatever we are doing as multiplication, addition and subtraction, चाहे हम multiplication कर रहे हैं, चाहे हम addition कर रहे हैं, चाहे हम subtraction कर रहे हैं, हम हमेशा अपनी कैलकुलेशन को फ्रॉम राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे एंड फ्रॉम यूनिट और वंस प्लेस वैल्यू. व्हाट इज आवर नेक्स्ट प्लेस वैल्यू? इशारा से यू टेल मी. गुड. और नेक्स्ट प्लेस वैल्यू इज टेंस. व्हाट इज आवर थर्ड प्लेस वैल्यू? उमर बच्चे यू टेल मी. Good. Our third place value is 100. Now we have 100 place value number. अब हमारे पास क्या होगा? 100 place value पे भी numbers होंगे और हम उनको भी ऐड करके लिखेंगे. Now example number 1, हम example number 1 को सॉल्व करेंगे ताकि हमारे लिए example number 1 is 100 tens ones. 5, 2, 9, 3 and 6. Now we have to add these numbers. From where we will start our calculation? Hudayan bache, you tell me. Good. We will start our calculation from unit or ones place value. So 9 plus 6 is equal to good. 9 plus 6 is equal to 1, 5, 15. 9 plus 6 is equal to 1, 5, 15. So can we write these both numbers on unit or ones place value? Aisha Bache, you tell me, can we write these two numbers on ones or unit place value? Very good. No, we will write 5, just 5 and 1 is our carry. 1 हमारे पास क्या बचेगा? Carry. 9 plus 6 is equal to 15. 9 plus 6 is equal to 15. So we will write 5
on unit or ones place value and one is और carry. Carry in कर देंगे हम tens की place value में. कहाँ पर carry करेंगे? Tens की place value पे. Now we have three numbers. First is 1, second is 2 and third is 3. Now we have to add these numbers. These are the numbers on tens place value. ये कौन से numbers हैं हमारे पास? Tens की place values के number. And this is our carry. और ये हमारे पास क्या है? हमारा carry. 1 plus 2 is equal to 3. 3 plus 3 is equal to 6. So we will write 6 on the tens place value. अगर आप carry को ही add नहीं करोगे तो हमारा आंसर wrong होगा. We have no number for adding on tens 100 place value, so we will write 5 on 100 place value. Example number 2. Example number 2 is 100 tens ones. 3, 4, 8, 5, 2 and 8. No, Ayan, बच्चे, you tell me from where we will start our calculation. Good. We will start our calculation from unit or ones place value. From unit or ones place value. 8 plus 8 is equal to dash. Abdullah Betta, you tell me 8 plus 8 is equal to 8 plus 8 is equal to 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 stars for these, and now I am drawing 8 more stars. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. 8 stars for above these numbers and second stars for these 8 numbers. अब हमने 8 stars ऊपर ड्रॉ किए and 8 stars नीचे ड्रॉ किए. Now we have to combine these 8 stars and 8 stars. We have total 16 stars. 1, 6, 16. Which number we have to write on unit or ones place value? हमें कौन सा नंबर लिखना चाहिए यूनिट और वंस प्लेस वैल्यू पे? इब्राहिम बेटा आप मुझे बताएं. Yes, we have to write 6 on unit or ones place value and 1 is और carry. 1 हमारे पास क्या बन जाएगा? और carry. Now we have to go on tens place values number. अब हमें कहाँ जाना चाहिए? Tens place values number पे. 1 plus 2 is equal to 3. 3 plus 4 is equal to 7. 3 plus 4 is equal to 7. We have no number to put a carry on 100 place value. अब हमारे पास कोई भी नंबर नहीं है जिसे हम 100 की प्लेस वैल्यू पे कैरी कर दें. So 3 plus 5 is equal to 8. Now example number 3, which is 307, 6, 7 and 3. Abira bachche, you tell me 7 plus 3 is equal to dash. Good. 7 plus 3 is equal to 10. Which number we have to write on unit or ones place value number? Maria, you tell me bachche. Good. We will write 0 on unit or ones place value and 1 is our carry on tens place value number. Now we have 0 and 7. 0 plus 7 is equal to 7. 7 plus 1 is equal to 8.
Now we have to go on 100 place value number. 3 plus 6 is equal to what, Rahima beta? You tell me. Good. 3 plus 6 is equal to 9. 3 plus 6 is equal to 9. Now we will solve example number 4, which is 100 tens ones. 6, 1, 8, 2, 2 and 9. 8 plus 9 is equal to dash. 8 plus 9 is equal to dash. नूरुल फर्स्ट बेटा आप मुझे बताएं. Good. 8 plus 9 is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. These two numbers, we have two numbers, first is 8 and second is 9. So we will draw 8 stars on 8 numbers and 9 stars on 9 numbers. Now combinedly we will count these stars. अब हम क्या करेंगे, इन स्टार्स को combinedly count कर लेंगे. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 and 17. So when we add 8 into 9, so our answer is 17. Which number we have to write on ones place value numbers? Anabia, you tell me बच्चे. Good. We will write 7 on ones or unit place value numbers. And here we have a carry on tens place value number. 2 plus 1 is equal to 3. And 3 plus 1 is equal to 4. 6 plus 2 is equal to dash. Fasiha beta, you tell me 6 plus 2 is equal to 8. I hope these 4 examples will help you to solve the assessment of page number 34. If you find any difficulty, you can text me on Google Classroom or WhatsApp. Stay home, stay safe. Allah Hafiz.